Hello, dear students. Hope that you all would be good. Students, let's start in the name of God, which is most merciful and gracious. Students, in today's class, I am going to discuss about some miscellaneous idiomatic expressions. Students, as you know that in English there are many idiomatic expressions, but in today's class I am going to discuss only 10 of idiomatic expressions out of all. So let's see first of all the meaning of these idiomatic expressions in Urdu as well as in Hindi. Then I will make some sentences of all these idiomatic expressions in English as well as in Urdu and Hindi. The first idiom is back out of. Back out of means mukkar jana. The sentence is he cannot back out of his promise. वो अपने वादा से मुकर नहीं सकता. The second idiom is bear in mind. Bear in mind means याद रखना. The sentence is always bear the last words of your father in mind. अपने वालिद साहब के आखिरी अल्फाज हमेशा याद रखना. ब्रेक द आइस. ब्रेक द आइस मीन्स महर सुकूत तोड़ना या खामोशी तोड़ना. द सेंटेंस इज as I did not write to him for long, he had to break the ice at last. जैसा कि मैंने काफ़ी अरसा से उसे नहीं लिखा, उसने आखिरकार खामोशी तोड़ दी. ब्रेक लूज. ब्रेक लूज मीन्स खुल जाना. द सेंटेंस इज The cow broke loose at night. रात के वक्त गाय खुल गई. Break the news. Break the news means खबर सुनाना. We broke the news of their friend's death to them. हमने उन्हें उनके दोस्त की वफ़ात के मुतालिक खबर सुनाई. Breaks one's mind to an other. दिल की बात बताना. The sentence is the widow did not break her mind to anybody. बेवा औरत ने अपने दिल की बात किसी को नहीं बताई. Bring to book. Bring to book means जवाब तलब करना. The clerk was brought to book for his negligence. मुंशी से उसकी लापरवाही के मुतालिक जवाब तलब किया गया. Bring to light. Bring to light means आश्कार करना या बेनकाब करना. The conspiracy was brought to light by a police officer. पुलिस ऑफिसर के ज़रिए साजिश को बेनकाब किया गया. Burn the midnight oil. Burn the midnight oil means रात को देर तक पढ़ना. The sentence is he won a scholarship by burning the midnight oil. उसने रात को देर तक पढ़कर वजीफा जीता. Bury the hatchet. Bury the hatchet means सुलह करना. Pakistan and India
have decided to bury the hatchet. पाकिस्तान और इंडिया ने सुलह करने का फैसला कर लिया है. Students, it was all about miscellaneous idiomatic expressions, and I hope that all these idioms will increase your knowledge, and when you speak English you will definitely use all these idioms in your sentences. Students, ये थे वो तमाम idioms जो कि इंग्लिश में सेंटेंसेस में इस्तेमाल किए जाते हैं. उम्मीद करता हूँ कि जब आप इंग्लिश बोलेंगे इन तमाम idioms को अपने सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे. स्टूडेंट्स, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ. तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त. अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा. गुड बाय.